Check. वीडियो मोड जाता है The road to success is paved वीडियो मोड with जाता steps. है So you have got to believe that you are better than the वीडियो मोड ना किए Dream प्रेम big. करी
morning, everyone. I am Nirmiti, Assistant Professor in the Basic Science and Humanities Department at RERF College. I am truly delighted, honored, and very grateful that you have chosen to spend some of your valuable time with us at the wonderful event Nirmiti 2024 Startup Country. সালটা 1868। একজন 27 বছরের একটা ছেলে মাত্র 21,000 টাকা পুঁজি নিয়ে দেখেছিল একটা নতুন স্বপ্ন, প্রথম স্টার্টআপ বিজনেস শুরু করেন একটি ট্রেডিং কোম্পানি। তার লক্ষ্য ছিল ইন্ডিয়ান এন্টারপ্রেনারদের নতুন পথ দেখানো এবং বিদেশি পণ্যের উপর ভারতীয়দের একটু হলেও নির্ভরতা কমানো। তিনি কোয়ালিটি এবং ইনোভেশন এই দুটোকে হাতিয়ার করে নিজের স্বপ্নকে পৌঁছে দিয়েছিলেন উন্নতির চরম সীমায়। Yes, I am referring to one of India's first entrepreneur, Jamshedji Musselmanji Tata, who was a remarkable industrialist and philanthropist. He founded the Tata Group, which is India's largest conglomerate company. In the next 2 days, we will experience a wealth of exciting startup ideas, innovations, and incubation, along with the path of success, new dreams, fresh concepts, and most importantly, a journey of continuous learning. Without any further delay, we can begin our inauguration program with a huge round of applause. I specially request the students to give themselves a loud and enthusiastic round of applause. Before we move forward, I would like to request our esteemed and distinguished guests for today to come up on the stage and take their places. I would like to call Mr. Pradip Mukherjee, former MD, Webel, and Principal Advisor to Regent Education and Research Foundation Group of Institutions. Sir, if you please. Next, I would request our second distinguished guest for today, Mr. Mukherjee, founder and mentor, ER by AR Academia and Drone Academia. Next, I would request our beloved GM Sir, Mr. Rana Pratap Singh, GM Admin RERF GI, to please come on the stage. Next, I would request Dr. Sudeep Boshak, Principal RERF, Sir, to please come on the stage. Next, I would request Mr. Milon Mojumdar, Principal RIST, to come on the stage. আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব হাততালিটা একটু জোরে পড়ুক। Next, I would request Dr. Chandan Dash, Principal SVIMS, to come on the stage. Now, I would request Mr. Shubhankar Ghosh, Registrar, Regent Education and Research Foundation Group of Institution, to come on the stage. Next on my list, I have Dr. Anindita Dash, Dean Admin and Student Affairs, Regent Education and Research Foundation Group of Institution. Ma'am, please. Next, Dr. Rajarshi Bandopadhyay, Dean IQSE, RERF. I would request sir to please come on the stage. Next, I would request Mr. Suprabhat Basu, Deputy Registrar, RERF GI, to please come on the stage. Last but certainly not the least, I would like to call Dr. Orindita Shaha, President IIC Cell, on the stage. Ma'am, please.
I would also like to call our Chief Admin Officer, Pramod sir, to come on the stage. Sir, please. Thank you so much, sir and ma'am, for your time. It is time to perform a ceremonial gesture that signifies the dispelling of darkness and the ushering in of knowledge, wisdom, and enlightenment. I'm talking about the lighting of lamp. The lighting of the lamp is not just a tradition, but a symbol of hope, positivity, and a bright future ahead. It reflects the flame of inspiration that drives us towards progress and success. I would now request our distinguished guests on the stage to come forward to join us in lighting the lamps, marking the official commencement of our program Nirmiti 2024, a startup conclave. I would request all students to kindly stand up. I would request all students to kindly stand up. Thank you so much to our sirs and ma'am. Before we take our program forward, I would request Dr. Orindita Shaha, President IIC, RERF, and also Associate Professor of Electrical Engineering Department of Regent Education and Research Foundation, to come and welcome our guests. আমাদের ইনঅগুরেশন প্রোগ্রামের সময় যে বাঁশিটা বাজিয়েছে স্নেহাশিস, ওর জন্য একটা আলাদা করে হাততালি হোক। অরিন্দিতা ম্যাডাম। Hello. A very good afternoon to our distinguished dignitaries, participants, colleagues, and my dear students. It is with greater honor and immense pride that I, Dr. Orindita Shaha, President of the Institution Innovation Council, IIC of Regent Education and Research Foundation, group of institutions, welcome you all to Nirmiti 2024, a startup conclave. Today marks the beginning of an exciting journey,
one that celebrates the spirit of innovation, creativity, and entrepreneurship. Nirmiti 2024 is a celebration of the power of human imagination and unyielding drive to create something better. Through the exchange of ideas, experiences, and expertise, we aim to ignite a spark of innovation that will fuel the growth of future leaders and innovators. To our talented participants, I would like to say this is your moment. Nirmiti offers a stage for your ideas to flourish, for your creativity to take shape, and for your entrepreneurial spirit to soar. Your work here today has the power to impact industries, communities, and lives in truly remarkable ways. I encourage you to take full advantage of this opportunity to learn, grow, and collaborate. To our esteemed guests, mentors, and partners, your support and guidance are invaluable. By being here, you are not only encouraging innovation but also playing a crucial role in fostering the next generation of change makers. To everyone present here today, Nirmiti 2024 is not just about individual success, it is about collective growth. As we officially begin Nirmiti 2024, a startup conclave, I wish all the participants a very good luck and hope this experience inspires you to take your ideas to a next level. At last, let us remember that innovation is not a destination, it is a journey. Thank you, and let's make today the beginning of something extraordinary. Thank you so much, ma'am. I would request our students to please give a big round of applause. Now, I would request our Principal Advisor of RERFGI, Mr. Pradip Mukherjee, sir, to kindly come on stage and please share your thoughts for the program that we are hosting. This is fine. Good afternoon and warm welcome to you all in Nirmiti 2024. And my regards to all the dignitaries on the dais and in the auditorium. This is a wonderful and unique event organized by Regent Education and Research Foundation. This is an inter-college competition, startup competition. You all must be knowing that startup entrepreneurship is the new technological wave in the globe which is driven by innovation and also by disruptive technologies. So we just want our students, not only for the College of Regent Education and Research Foundation, but also other technological colleges in the state to inspire and ignite their mind towards innovation. We say that entrepreneurship, generally people think that this may be a second option after the employment. But students, with my 40 years of experience in the industry, I can say that please do consider entrepreneurship seriously as a career option. Even if you do not pursue your entrepreneurship, but whenever and wherever you go, you may be placed in a product development group or a process development group or a value engineering group. There also that innovative mind is required. This particular forum is providing you the networking opportunities. This forum is providing you the opportunity to connect with the investors and your mentors. Please use this forum effectively, connect everybody and collaborate. I wish you a good stay and useful stay and go ahead in your career with the entrepreneurial mind. Thank you all. Thank you very much.
Thank you so much, sir. You have been a true inspiration for this program. So I want to thank you personally. And now I would request our distinguished guest for today, Mr. Shomir Mukherjee, founder and mentor of VR and AR Academia and Drone Academia, to say a few words about how he is feeling today. My beloved students, ladies and gentlemen, and the distinguished guest on the stage. A very, very good afternoon. My dear friends, this is a very auspicious program, and I seriously don't want to talk technology today. I want to tell you something which is directly connected with your education and money. You know, if you understand this sloka, then you will get everything. Try to achieve that. It's Vidya Dadati Binayam. Binayam Yati Patratam. Means what? Vidya Binoy Dan Kare. You know, wisdom makes you polite. Binayam Yati Patratam. Binoy, যদি তুমি হও তাহলে তোমার অনেক বন্ধু হবে. If you are polite, you will have many friends. Patratam dhanumapnati. যার যত বেশি বন্ধু সে তত বেশি কানেক্টিভিটি পায়, কমিউনিকেশন ভালো হয়, and earn money. Na dhanam tu kuto sukham. I think last line everybody understand that without money, no happiness. So please try to be little polite. If you are polite, everything will be in your hand. This is first. And second, a small task. You know, in this particular it's not stage, it's a space, and there is a huge howling of the sound. I will request the civil engineering students to take care of this. If they do not have any idea by this period, they can come to me. I will tell them a very cheap solution by which they can control this. This is a very annoying, and our engineering college should not sustain with this. And third thing, in the foyer, we are just doing the same thing, you know, lamp lighting. It's a pretty interesting word was there. After a long time, I got that word, Uttishtata Jagrate. Can anybody tell me what is the meaning of that? যে জেগে আছে সে উঠে পড়েছে. Done? So take care once again, and I wish seriously a great success of this big program. আমাদের অভ্যেসই জ্ঞান দেওয়া, তাই একটু জ্ঞান দিয়ে ফেললাম. Thank you so very much. Thank you so much, sir. Before we move forward with our program, we have a very special guest among us. Srimati Anushwa Chakraborty, OC Community Policing, Barakpur Police Commissionerate. Ma'am, we welcome you all on behalf of the whole RERFGI team. Now I would request our GM sir, Mr. Rana Pratap Singh, to felicitate ma'am. Sir, please.
আমি রিকোয়েস্ট করব অনিন্দিতা ম্যাডামকে উত্তরীয়টা পড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুসুয়া ম্যাডামকে। ম্যাম, আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য যদি কিছু একটা বলেন আপনি। A very good afternoon to all the dignitaries present on the dais and off the dais. সকলকে অনেক নমস্কার এবং অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই সময়টা আমরা জানি যে আমাদের দুর্গাপুজোর যে সময়টা সেখানে আমরা শুরু করেছি, কিন্তু তার মধ্যে মনে হচ্ছে আজকে এখানে কিন্তু বেশ সেই আনন্দ সেই উচ্ছ্বাসটা দেখতে পাচ্ছি। and I would like to congratulate all the participants who are here to display their projects. Best wishes to all of you. Thank you so much. Wish you a very happy and safe Pujo ahead. Thank you. Namaskar. Thank you so much, ma'am. Now, before we move towards the conclusion of our inaugural program, I would request Pradip sir to kindly felicitate Mr. Mukherjee. Sir, if you please. Students, please give a big round of applause. স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমোতে দেয় না। সফল মানুষেরা কাজ করে, ভুল শোধরায়, কিন্তু হার মানে না। সাকসেসফুল পিপল ডু নট ওয়ার্ক দ্য ডিফারেন্ট থিং, দে ডু দ্য সেম ওয়ার্ক ডিফারেন্টলি। আমরা খুবই গ্রেটফুল আপনারা আপনাদের বিজি শিডিউল থেকে টাইম বার করে আমাদের এখানে এসেছেন। আমরা আশা করব যে আমাদের প্রোগ্রাম এবং আমাদের স্টার্ট আপ কনক্লেভ নির্মিতি 2K24 আপনাদের ভালো লাগবে। আর সাথে সাথে RERF গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। As we move forward towards the conclusion of our inaugural program and beginning of our next set of programs, I would humbly request our distinguished guests to visit the stalls and motivate our students participating in the startup conclave and also enjoy the rest of the program. Thank you so much, sirs and ma'am, for your valuable time. It has been an honor hosting you all. As we do set up our stage for our next set of programs, I would take few minutes from your valuable time and I would request two of our very talented students to recite something for you all. First, I would call Ishka Tripathi of BBA Department, SVIMS, to say a poem to inspire everybody present here, especially the students. Ishka, if you please. Our media partner, the Telegraph Online Edugraph, radio partner 91.9 Friends FM, frequency Friends की, event partner Keventers, associate banking partner SBI, the banker to every Indian, and silver partner B Boni Professional. मैं सबसे पहले यहाँ मौजूद अपने सभी अध्यापिका को यानी कि अपने सभी फैकल्टीज़ को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज उन्हीं के वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम अपने सोच विचार को शेयर कर सकते हैं।
और जितने जन आज यहाँ मौजूद हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। जो कविता मैं बोलने जा रही हूँ उससे आप लोग सब अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो। कविता का नाम है मैं एक चित्रकार हूँ। मैं एक चित्रकार हूँ, वक्त के हिसाब से खुद को बदलता हूँ। आंसू आए तो पोंछ लेता हूँ, खुशियाँ आए तो उसे छुपा लेता हूँ। मेरी मौजूदगी की जो तस्वीरें दिख रही है, मेरी मौजूदगी की जो तस्वीरें दिख रही है, उससे मैं खुद भी हैरान हूँ। कभी सच्चाई की रंग को झूठ में घुलता हुआ देखा हूँ, तो कभी अपने तकलीफ़ों पर पानी डालकर फिर से एक नई छवि बनाया हूँ। आखिरकार मैं एक चित्रकार हूँ। कोई जो पूछे कैसे हो, तो मैंने भी कह दिया खुशियों का ठिकाना नहीं। कोई जो पूछे कैसे हो, तो मैंने भी कह दिया खुशियों का ठिकाना नहीं। पर दिल चिक चिक कर कह रहा था सपने टूटे हैं, रिश्ते छूटे हैं, अकेला खड़ा हूँ, जिम्मेदारियों में दबा हूँ। और फिर मैंने रंग बिरंगे रंग डालकर खुद को मनाया हूँ। आखिरकार मैं एक चित्रकार हूँ। किसी ने फिर पूछ लिया तो बता फिर तेरे भरोसे का क्या रंग है। किसी ने फिर पूछ लिया तो बता फिर तेरे भरोसे का क्या रंग है। तो मैंने भी कहा मेरे जीवन के रंग की तुलिका जिसके हाथों थमी है, वही मेरे भरोसे का रंग है। जी हाँ, मेरे जीवन के रंग की तुलिका जिसके हाथों थमी है, वही मेरे भरोसे का रंग है। मैंने फिर आगे समझाया मेरे परेशानियों को जो डसा वो काला नाग, मेरे जीवन की जहर को जो खुद निगल लिया वो नीलकंठ। जब जब अकेला पाया खुद को, तब तब उसके डमरू की आवाज़ सुनाई दी मुझको। ये जीवन की आकार भी कुछ उसके मस्तक की आकार की तरह है। गौर से सुनिएगा, ये जीवन की आकार भी कुछ उसके मस्तक की आकार की तरह है कि क्या पता आज जीवन में जो रंग है, जो सांसों का खेल है, कल सब धुल कर उसी में समा जाए। और मैं तो आखिरकार उसी की रचयिता, एक चित्रकार हूँ, एक चित्रकार। धन्यवाद। Thank you so much, Ishka. Now, I would request another student of RERF from MBA department, Rumela Brahma, to recite a poem to inspire all of you. Rumela, please. নমস্কার। উপস্থিত সকল গুরুজনদের আমার প্রণাম এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল পড়ুয়াকে আগাম শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি। প্রথমেই বলি, আজ আবৃত্তি করার জন্য সঠিক কোনো প্রস্তুতি আমার ছিল না, কিন্তু শিক্ষক শিক্ষিকাদের কথা একজন ছাত্রী হিসেবে আমার কাছে আদেশের মতো। এই কবিতাটা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভীষণ সময়োপযোগী বলে মনে হলো। তবে উপস্থাপনায় যদি কোনো ত্রুটি থাকে আমাকেও আপনাদেরই একজন মনে করে মার্জনা করে দেবেন। কবিতা কন্যা শ্লোক, রচনায় মল্লিকা সেনগুপ্ত। আশ্বিনের এক প্রাগৈতিহাসিক সকালে শ্রী রামচন্দ্র যে দেবী দুর্গার বোধন করেছিলেন, স্বর্গের দেবপুরুষগণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে রণদেবীকে অসুর নিধনে পাঠিয়েছিলেন, সেই দুর্গাই 21 শতকের নারীর ক্ষমতায়ন। তার মহা তেজ চির জাগরুক আগুন হয়ে জ্বলে উঠুক এই মাটির পৃথিবীর প্রতিটি নারীর মধ্যে। হে মহামানবী, তোমাকে সালাম। মেয়েটির নাম দুর্গা সোরেন বটেক। মায়ের ছিল না অক্ষর জ্ঞান ছটেক। সর্বশিক্ষা অভিযানে পেয়ে বৃত্তি, দুর্গা হয়েছে ইংরাজি স্কুলে ভর্তি। সাঁওতালি গান, ইংরেজি ভাষা বাহাতে, কম্পিউটারে শিখেছে ইমেল পাঠাতে। অঙ্কের স্যার ভুল হলে যোগে বিয়োগে গায়ে হাত দেয় পড়া শেখানোর সুযোগে।
দুর্গা জানে না কোনটা যৌন লাঞ্ছনা। স্যারটা নোংরা বটে, কথাটা মানছ না? শেষে একদিন স্যারের নোংরা হাতটা মোছড়ে দিয়েছে দুর্গা, মেরেছে ঝাপটা। ওরে অর্ধেক আকাশে মাটিতে শ্যাওলা, আকাশে উড়বে হবেই কল্পনা চাওলা। যদি না তার বিমান ভেঙে পড়ে দুদ্দার, মহাকাশচারী হবেই বটেক দুর্গা। বিশ্বায়নে পণ্যায়নে খণ্ড খণ্ড মানচিত্রে, বাংলা বিহার রাজস্থানে সাধারণী নামস্তুতে। পুক্তব্রতে পণ্যিব্রতে মোহমুদ্রা ধ্বংসমুদ্রা, প্রযুক্তিতে গৃহকর্মে সাধারণী নামস্তুতে। আমার দুর্গা পথে প্রান্তরে স্কুল ঘরে থাকে। আমার দুর্গা বিপদে আপদে আমাকে মা বলে ডাকে। আমার দুর্গা গোলগাল মেয়ে, আমার দুর্গা তন্নি, আমার দুর্গা কখনো ঘরোয়া কখনো আগুন বন্যি। আমার দুর্গা মেধা পাটেকার, তিস্তা শীতলা বাদেরা, আমার দুর্গা মোম হয়ে জলে অমাবস্যা রাধেরা। আমার দুর্গা মণিপুর জুড়ে নগ্ন মিছিলে হাঁটে। আমার দুর্গা কাস্তে হাতুড়ি আউশ ধানের মাঠে। আমার দুর্গা ত্রিশূল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্তে। আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শর্তে। আন্দোলনে উগ্রপন্থে, শিক্ষাব্রতে কর্মযজ্ঞে, রান্নাঘরে আতুর ঘরে মা তুঝে সালাম। অগ্নিপথে যুদ্ধ জয়ে, লিঙ্গ সাম্যে শ্রেণী সাম্যে, দাঙ্গা ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মা তুঝে সালাম, মা তুঝে সালাম, মা তুঝে সালাম। থ্যাংক ইউ। যে সব কিছু তৈরি পাওয়ার জন্য তৈরি, সে জীবনে কিছু করতে পারে না। সফল ও ব্যর্থ উভয়ের দিনই 24 ঘন্টায়। নো মানে একবারে না নয়। এ নো, দ্যাট ইজ নেক্সট অপরচুনিটি। বাহ্যিক সাফল্য আচরণের উপর নির্ভর করে। যদি আপনি নিজেকে চরিত্রবান, সাহসী, সৎ বলে বিশ্বাস করেন, তাহলে এগুলো আপনার আচরণে প্রতিফলিত হবে। জয়ী হতে হলে কি কি করতে হবে, বিজয়ীরা সেটার উপর গুরুত্ব দেয়, আর বিজিতরা যা যা পারে সেটার উপর গুরুত্ব দেয়। এডিসন বলেছেন, সাফল্য হলো 95% কঠোর পরিশ্রম আর 5% অনুপ্রেরণার ফল। আওয়ার মিডিয়া পার্টনার দ্য টেলিগ্রাফ অনলাইন এডুগ্যাপ, our radio partner 91.9 Friends FM frequency Friends Key, our event partner K-Ventures, our associate banking partner SBI, the banker to every Indian, and our silver partner B Boni Professional. Now we proceed our next segment, keynote speech. It is my great honor to introduce our first speaker for the keynote speech segment, Mr. Pradip Mukherjee, former Managing Director of West Bengal Electronics Industry Development Corporation Limited, WEBEL. And he is the principal advisor of our college. আমাদের এই নির্মিতির এতদিনের যে জার্নি, এতদিনের যে চেষ্টা, সবার যে অক্লান্ত পরিশ্রম, সেখানে আমরা স্যারকে ছাড়া এই পরিশ্রমের কোনো মানেই হয়তো হতো না। আজকে আমরা যেই পরিস্থিতিতে যেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, সম্পূর্ণভাবে সেটা প্রদীপ স্যারের বিশাল অবদানের জন্যই। তো প্রদীপ স্যারের জন্য আমি চাই আমাদের সেখানে যতজন স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি সবাই আছেন, একটা হাততালি দিয়ে ওনাকে থ্যাংক ইউ অন্তত জানান। It is my pleasure to request Dr. Rajarshi Bandyopadhyay, Dean IQAC RERF, to kindly come forward and felicitate Mr. Mukherjee.
Keynote speech of Dr. Mukhopadhyay is Design of Thinking. Sir, it's yours. Will you please settle down before we start? Many of you have heard about design thinking. What it exactly means, how to design your thinking, it's very important. And when we say that design thinking means you have to think for the solutions of the customer, to a specific customer I am talking about. So, a generic solution sometime will not help to a particular customer. You have to understand and appreciate the strength and weakness of the customer and his opportunities and challenges. And accordingly, you have to design your thinking and your solutions. So today we are going to talk about design thinking. The concept and definition speaks is a problem. Design thinking is a problem-solving approach that emphasizes empathy, creativity, and novelness. It has to be unique and it has to be customer-centric with empathy basis. And design thinking, that's how it is defined as human-centered and iterative design. The four principles we follow during the design thinking are human rule. Means whenever we are thinking of a solution for a particular customer, we'll have to give importance to the human rule. Means it should be customer centric as well as that it should be easy to implement and easy to follow. That then comes ambiguity rule. Means every solutions has got some positive as well as some negatives also. You have to consider a solution which has maximum positive and minimum negative in it. And the third rule comes redesign rules. Means the customer's requirement or the requirement of common people remains the same, but we have to develop a new way of delivering that particular requirement or that particular desire of the customer, and that is how the design thinking comes into play. And the final thing comes the tangibility rule. Tangibility rule is that the solution should be tangible enough. It should not so happen that I give a solution which cannot be implemented or which cannot be actually put in place under the given circumstances. Let's say what are the steps of design thinking? First of all, it comes empathize. Unless and until you empathize with the customer, you understand their problem properly, you cannot define the problem. If you only just hear their problem, that will not be enough. You have to sit beside, work shoulder to shoulder to really understand where the problem is, and then only you can understand and define what the problem is. And once you define the problem, you can ideate the actual solutions. You can ideate the actual solution according to the problems you have defined. People say that once you define the problem, 50% solutions are arrived at. Then comes, once you ideate, you have to develop the prototype or a minimum viable product kind of thing, and you have to try it out, test it out, and see that how good it is working. And you must take the feedback of the customer or end user to get their feedback and to correct your solution further. The advantages goes like, it is encouraging innovation and creativity. It focuses user first and then the solutions and the technology.
The third thing comes enhances collaboration. You are doing collaborations not only with the customer, but also you are doing collaborative things with the other departments or other stakeholders. And it reduces risk through iterative testing. It's not that you are finally designing something and putting it for the test. There you might see that although you have developed the solution in full, but it's not giving the proper solution or proper satisfaction. Then come improves the problem solving and decision making. Problem solving gets immensely improved because you are doing iterative testing in an agile mode. What are the challenges? Challenges are human being is resistive to changes. So it is difficult to implement new ideas, new processes, new technologies. So that challenge always remains. Difficulty in measuring the return on investment. Maybe initially with a new kind of solution, you may not be able to really measure the return of investment. You have to wait for some time, maybe for 6 months or 1 year, to really measure the return of investment subsequently. And with the limited resources and time constraint, you can do this kind of design thinking practices. Balancing creativity and practicality. See, many a times it is seen that creativity is at high, but practicability is low. Here you have to see that the idea you are giving, the particular customized solution what you are giving is implementable. If it is not implementable, then that solution has no meaning and no use for the end customer. And the final thing is, the final challenge is integrating design thinking with the existing workflow. As I said, that human being is resistive to changes. So whenever you are thinking a new thing, new way of doing, new solution, how do you integrate that new solution with the existing solution? These are the challenges in the design thinking. But even then, the design thinking is an ongoing process and being accepted by most of the customers. Design thinking tools are mind mapping, then user personas, customer journey mapping, SWOT analysis, brainstorming and ideathon techniques, then prototyping and wireframing, then design thinking canvases. Through this, you can use the design thinking tools to develop design thinking solutions. What are the real world applications? Real world applications are, it is used for product development, service design, user experience design, business strategy and innovation design, and social entrepreneurship and non-profit organization development. Popular design thinking methodologies what we use are IDEO's design thinking process, Standards D-School design thinking process, Google's design thinking spirit, then Agile methodology and Lean startup approaches. Finally, I would like to conclude by saying that design thinking is a powerful approach to drive innovation, creativity, and user-centric solution. Which is important is user-centric solution. By understanding its principles, steps, and advantages, organization can leverage design thinking to tackle complex challenges and create impactful solutions. So with these few words, I would like to conclude my speech. If anybody has got any question, I would be happy to answer that. Anybody having any questions, please come forward. If anybody having any question, please come forward. Otherwise, I will conclude my lecture. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir.
our media partner, the Telegraph Online Edugraph, our radio partner, 91.9 Friends FM frequency Friends Key, our event partner, Keventers, and associate banking partner, SBI, the banker to every Indian, and silver partner, B. Boni Professional. বাহ্যিক সাফল্য আচরণের ওপর নির্ভর করে। যদি আপনি নিজেকে চরিত্রবান, সাহসী, সৎ বলে বিশ্বাস করেন, তাহলে এগুলো আপনার আচরণে প্রতিফলিত হবে। আজ থেকে 5 বছর পর আপনি কোথায় যাবেন তা নির্ভর করবে এখন আপনি কী ধরনের বই পড়ছেন, কোন ধরনের মানুষের সাথে মেলামেশা করছেন সেটার উপরে। Our next guest, speaker Dr. Arindam Biswas. Arindam Biswas is a professor in the Department of Information Technology at the Indian Institute of Engineering, Science and Technology, Sipur, India. He holds a master's and doctorate from the Indian Statistical Institute, Kolkata, with research interests in digital geometry, image processing, medical image analysis, and biometrics. He has contributed significantly to his field. He has served on the technical committee for discrete geometry of the IAPR and as Dean of International Relations at IIEST, Shibpur. Currently, he is a member of the expert committee on AI, big data, and robotics for the government of West Bengal. আমি আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর সুদীপ বসাক স্যারকে ডেকে নেব স্টেজে আসার জন্য। অরিন্দম স্যার। আপনি কি অর্জন করেছেন সাফল্য মাপার মানদণ্ড সেটা নয়, বরং আপনি পড়ে যাওয়ার পর কতবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন সেটা। পরাজয়ের ভয় পরাজয়ের চেয়েও খারাপ। যে ব্যক্তি পড়তে পারে কিন্তু পড়ে না, আর যে ব্যক্তি পড়তে পারে না, দুই সমান। Our media partner, the Telegraph Online Edugraph, our radio partner, 91.9 Friends FM frequency, Friends Key, our event partner, Keventers, our associate banking partner, SBI, the banker to every Indian, and our silver partner, B. Boni Professional.
সমস্ত পৃথিবী বলছে আমি গোলাকার, কিন্তু আমার পায়ের তলার মাটি বলছে আমি সমতল। পায়ের তলার মাটির জোর বেশি, কেননা সে যেটুকু বলে সে একবারে তন্ন তন্ন করে বলে। পায়ের তলার মাটির কাছ থেকে পাই তথ্য, অর্থাৎ কেবল তথাকার খবর। পৃথিবীর কাছে থেকে পাই সত্য, অর্থাৎ সমস্তটার খবর। আমরা ডক্টর অরিন্দম বিশ্বাস স্যারকে ডেকে নেব, আর ডক্টর বিশ্বাসকে ফেলিসিয়েট করবেন আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর সুদীপ বসাক। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার আপনি কিছু বলুন। হ্যাঁ, Good morning. Good morning to all of you. Am I audible? Okay. Good morning to all of you. Am I audible to you? Yeah. Thank you. So, in this session, we'll have a look at the role of the engineering institutions or per se institutions on entrepreneurship. So on this occasion of Nirmiti 2024, let us see that how entrepreneurship can be promoted from the institute. So what we will look at that what we actually mean by an entrepreneur, and then what will be the role of the entrepreneur in shaping the future of the country. Then all at the end we'll have a look at the national education policy and how it prescribes the entrepreneurship. So what is entrepreneurship? Entrepreneurship, if you look at, then it is essentially the act of establishing a business. Okay? You are starting a business, that is entrepreneurship. And who is an entrepreneur? Entrepreneur is a person. Why someone should want to be an entrepreneur? One of the reasons is that, what are the motivations? If you look at, you are your own boss. If you are working somewhere, then you have to work under the control of somebody else. But when you yourself is an entrepreneur, then you are your own boss. That is one point. And then a desire for financial achievement. In fact, doing a job, you may not achieve great financial gains, but through entrepreneurship, you can get financial gains. And also job security, which looks like a kind of misnomer here. However, being an entrepreneur gives you the job security. The job scenario, you are working in a company, then at some point of time, due to the health of the company, you may lose the job. However, if you are setting up your own company, then it is going to give you a bit more job security for yourself. Now, what are the different flavors of entrepreneurship? We generally make mistakes in saying that when you are going to be an entrepreneur means that you are going to set up a big company. It's not so. Essentially, there can be different types of entrepreneurships, and the scales of the businesses can be small businesses. If you are starting a grocery shop or some other business like beauty salon or something else, then that is under the small businesses. And who is going to fund such businesses? Maybe you yourself can fund it.
The next one is scalable startups, the startups which can be actually brought up. Like if you look at driven by the dream of changing the world, funding most of the time these fundings, this is the scalable startups are actually started by the people, by the students who are graduating. When you graduate, you have a dream. In order to captivate that dream, you go to the venture capitalists. And the venture capitalists, if they like your business idea, they are going to fund you. Once it is funded, then what can happen is that you can start your business. And then large business. Large business means a business which is, it is funded by sustained innovation, disruptive technology. Most of the time, such entrepreneurship comes from inside the big company. The big company is looking for a disruptive technology. When they get a disruptive technology, then they start a different kind of entrepreneurship. You will see that Microsoft or some other big companies, they are going to basically acquire certain small startups. That is a kind of entrepreneurship we are meaning by the large businesses. Then the last one which has come up now is the social entrepreneurship. Social entrepreneurship means you are going to do something for the products or services for the social causes. So these are the 4 different flavors of entrepreneurships. Now, specialties of an entrepreneur. So, when you are looking at the entrepreneurs are, they have certain qualities inside the entrepreneur. So if you look at, you see that they have a vision. Essentially, they have a vision. Then they have the enthusiasm to carry forward, and they're self-confident. Like entrepreneurship is not the job of a weak-hearted people. You have to be strong enough. You have to be technically strong. You have to be strong and confident. And then you have to be tolerant. Tolerant, what do you mean by tolerant? When you are setting up a business, you have to keep in mind that the business might have some ups and downs. So keeping that in mind, you have to move forward. That's what we mean by tolerant. And then persistent. Persistent means once you start your business, you have to be with it for say 1 year, 2 years, 5 years, even after 10 years, your business may become successful. So these are the qualities which you are looking for in an entrepreneur. What are the different skills that you will require? We have to understand one thing. Most of the time, when we communicate with other people, the communication remains incomplete. The communication carries some kind of different meaning with it itself. Not only talking, but also your positivity, your enthusiasm, that should be exhibited in your communication. That's why we are saying that you should have professional communication. And dealing with people, when you are saying that dealing with people, when you say that we are dealing with people, means that management has to be a part of it. Then decision making, you have to make your own decisions because it is your own business. Technical knowledge should be sound. That is where the institutions come in. The institution will give you a lot of technical input. That is going to be your strength. And also, you should have the knowledge of economy and finance. If you want to excel in
business, then the, then the knowledge of economy is also very, very important. Right. Then types of entrepreneurs. This is I have just listed because you have to be passionate. Then a person with some special kind of knowledge. Then some people inherit the business. And then you have strong academic background. You stumble upon a new idea that also becomes a business. Then out of necessity, and you are a visionary. Yeah. Now, to start a new business, you must have a strong business idea. The business idea you should write down properly, and you have to unfold your imagination. I believe that you have heard about Nikola Tesla. Tesla used to think of a innovation, and then probably he used to imagine how he is going to do the complete implementation. When this imagination part is complete, then he used to go for the implementation. So these are some of the steps that you have to take up that I have mentioned here, is that you have to know the market, you have to know your competitors, then what are the products and services you are going to market, what is your location, whether the location is advantageous or not. Then you have to promote your business through advertisement, social media, etc. Then most important part is pricing. Pricing should be fast. Like if you look at the Maruti cars are very, very, popular just because of the right kind of pricing. And you also need to know the balance sheet, that by marketing the product, by selling the product, are you going to make some money or not? So you will need some capital. For that capital, it may come from your own money, or you have to ask for, from the venture capitalists. The stages of the entrepreneur is basically the dreamer. You imagine your business, then the architect, then you set up your business once in piece by piece, and then you build it, means your business is growing, and then cultivate. You further multiply your business, and then probably you get into R&D, research and development, so that you can multiply your business process further. Now, to promote entrepreneurship inside an educational institution, what we need is that you have to have a entrepreneurship development cell. You have to recognize the entrepreneur. You have to celebrate them, otherwise they will not get the enthusiasm. Then you have to give them finances, and you should have some ease of doing business. And you promote more women into the entrepreneurship. You also bring in the underprivileged in the entrepreneurship. Entrepreneurship means it is to undertake something. And it is basically the marriage of innovation, productivity, and effective competition. Basically, entrepreneurship is more of a leadership kind of thing rather than ownership. So that you have to keep in mind.
if you are getting into entrepreneurship, then I can assure you that you are going to enjoy the journey. You have to take a lot of risks. You have to be bold enough. Then only you can carry forward with your business. Now, for building the organization, you have to connect and coordinate. Connecting the dots, probably you have heard of. You connect the dots, then you are going to get the product. You have to coordinate with many number of people. That is also very, very important. In fact, if you look at the developing world economy, the more number of jobs are getting created, and through entrepreneurship. Like the large businesses cannot really create many jobs, whereas small businesses can create. Oh, sorry. So, an entrepreneur is a person, a creator, an organizer, a decision maker, an initiator, a leader, a motivator, and a risk taker. Some of the entrepreneurs, if you already know the names: J.R.D. Tata, Ajim Premji, Narayana Murthy, and Steve Jobs, to name a few. In order to have a good entrepreneurship environment, you should have some institutional rules, and through that you can actually establish good companies. If you look at Steve Jobs, Steve Jobs was visiting the Xerox Corporation in Japan, and there he saw the graphical user interface, and which became a point that was seen by Steve Jobs, and later on he designed the graphical user interface, and all of you are using it that way. If you look at computers, computer technology was essentially developed by the IBM. However, the mini computers, the desktops, all these things were taken forward by Digital Corporation and Sun Microsystems. So IBM missed the bus, whereas the other companies took up the cause of mini computers. Innovation is a major part of entrepreneurship, but innovation does not always mean innovation in technology. It can be innovation in the distribution system, like Amazon, innovation in pricing strategies, and innovation in convenience. There are new industries, probably I should not read out all of them. All these industries have come up in the recent past. These are the new ideas which we can take care of. In recent times, that is what I was trying to say, that more jobs have been created by the startups than the large businesses.
Hence, the country needs more entrepreneurs, more small businesses, and very strong businesses. Now, I will actually touch upon several points related to National Education Policy 2020, by which we are all governed. The National Education Policy talks about National Research Foundation. Also, it talks about academic bank-up credits, and the academic bank-up credits actually promote that you can take a course anywhere else and your credit will be in your repository. That way, the education will be distributed over. It has largely emphasized upon the internship and vocational courses. Most of the time, we think that internships are like fun kind of thing. It is not so. If you do internship in a good company, then you will get a feel of the actual working environment, technology, and the business. So that's why National Education Policy is giving much of importance on the internship and vocational courses. And it also talks about multidisciplinary education. Why we are talking about multidisciplinary? In the earlier cases, we had something which is like you are taking up computer science. It's quite limited in the term computer science and engineering. Rather than that, we are looking at people who knows mechanical engineering as well as artificial intelligence. So multidisciplinary approach is going to be imposed upon the country's educational scenario. It has set up National Research Foundation. There you can apply for projects, you can get projects, you can also get funded for the purpose of setting up a company. Towards your entrepreneurship, it will help you. All right. Now, as far as the institute is concerned, what we can do is that all institutions should have some incubation center where it will incubate the entrepreneurs. The entrepreneurs, the students who are having new ideas, they will come up and their ideas should be funded, and after funding, they'll set up a small company so that they can make their product and that product can be sold in the market. So incubation center will be a part and parcel of each academic institute to promote entrepreneurship. Also, National Education Policy, it emphasizes upon that you can carry your credits lifelong. Like you do 3 years of course, after that you go to industry, you do some training, that will be credited and the credits will be actually added up in your bank. So that is again a great idea. In the times to come, within within 5 years, you will see the changes in the academic scenario.
You have to support your entrepreneurs, the startups, since unless on behalf of the educational institute, on behalf of the government, unless you support them, you are not really going to promote the entrepreneurship scenario. And those who are taking the support, they have to be also very, very serious. Like if you are doing a business, you are taking some loan from the government for setting up your business, you should be very, very serious that you can pay back the loan. The basic motive behind funding you, that should be solved. And each institution should have some networks with the, say, Bengal Chamber of Commerce and Industry, if you are in Kolkata, or you can have some set up with the FICCI, so that you can have some kind of guidance from them. In our institute, we have some kind of set up with some kind of MOU with BCCI, so that we can promote the entrepreneurship activities. You should also have some collaborative environment. Please collaborate with different institutions and industries so that it becomes fruitful. Also, a big part of entrepreneurship is research. If you do not have enough input technologically, you are not going to come up with a big business. So naturally, you should have access to the recent research in the form of research papers and other literature that should be with you. On a regular basis, you should have some skill development workshops. Government of India promotes certain workshops. You can get in touch with them. They can come down to your place and have the workshop so that your students can get some idea about the skill development. So these are few acknowledgements. I thank the organizers of Nirmiti and RERF for inviting me on this occasion. I hope that it will initiate in you the concept of entrepreneurship, and I also hope that your institution can take certain clues from here so that it can be taken forward. Thank you so much. Thank you, sir. হ্যালো অকুল মাঝে ভাসিয়ে তরি যাচ্ছি আঙিনায় আমি শুধু একলা নেয়ে আমার শূন্য নয় নব নব পবন ভরে যাব দ্বীপান্তরে নেব তরি পূর্ণ করে অপূর্ব ধন যত ভিখারি তোর ফিরবে যখন ফিরবে রাজার মতো যাবই আমি যাবই ওগো বাণিজ্যেতে যাবই তোমায় যদি না পাই তবু আর কারে তো পাই না এখানে আমরা সবাইকে পেয়েছি আর তাই আজকের অনুষ্ঠান আমাদের কানায় কানায় ভর্তি So our media partner, the Telegraph Online Edugraph, our radio partner 91.9 Friends, FM frequency Friends ki, and our event partner Keventers
and associate banking partner SBI, the banker to every Indian, and last our silver partner B Boni Professionals. এখন আমাদের ফার্স্ট হাফের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ। আমরা এখন লাঞ্চে যাব। লাঞ্চ আমাদের 2টো অবধি লাঞ্চ থাকবে। লাঞ্চের পরে আমরা আবার 2টোর পর থেকে শুরু করব। তো সবাইকে বলা হচ্ছে, স্টুডেন্টস এবং অল পার্টিসিপেন্টস, যে তোমরা লাঞ্চ করে নাও, টিফিন করে নাও, তারপরে আমরা আবার আসব ওই 2টো নাগাদ, 2 PM।
disconnected, paired, disconnected, বলি লাঞ্চ ব্রেকের পরে আমরা শুরু করতে চলেছি। আপনি বলুন, আমি বলে দিচ্ছি। Hello. 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 Good afternoon, everyone. We are about to begin our next program. I request everyone to kindly settle down. Students, I would like for you to kindly settle down. Good afternoon, everyone. I hope all my students are well fed and happy in their tummy. We are about to begin our next set of program. But before we do that, we have a very special guest among us. We have for today among us Dr. Chiranjeev Bhattacharjee. Sir, it is our honor to have you here with us today.
Dr. Bhattacharjee is the President of West Bengal Council of Higher Secondary Education. He is also a professor and former head in the Department of Chemical Engineering of Jadavpur University, Kolkata. Sir, I would humbly request you to come on stage and take your place. With that, I would request our GM Sir, Mr. Rana Pratap Singh and Mr. Pradip Mukherjee, Principal Advisor, RERF GI. Our next guest for today is Dr. Bhavesh Bhatia. Mr. Bhatia is a founder of Sunrise Candles. Sir started in the year of 1994 with a single dye and 5 kgs of wax. Today, more than 10,000 visually impaired and Divyang persons have been trained and employed to stand on their feet under the leadership of Dr. Bhavesh Bhatia, a 3 times national award winner, awardee and an international motivational speaker. Sir, it is an honor to have you with us today. They say when the going gets tough, the tough get going. Such is the story of a man who defied all odds and rose above all hardships. I would request Mr. Pradip Mukherjee, Principal Advisor, RERF GI, to felicitate Dr. Chiranjeev Bhattacharjee. A leader, an artist, Shri Bhavesh Bhatia. Visually impaired, Shri Bhavesh Bhatia lost his sight, but not his vision. A Paralympic medalist who has won more than 100 medals for the country. He worked hard making candles and diyas for a living. Thank you so much, He thought sir. of adding value to the lives I would of the request visually our challenged. GM Sir, And Mr. thus Rana founded Pratap his Singh, venture, to felicitate Sunrise Candles. Dr. Bhavesh Bhatia. Sir, if you please. Hundreds of people in need of employment found solace at Sunrise Candles. Thank you so much, sir. Now, I would request Dr. Bhattacharjee. Under the guidance of Reliance Foundation's Drishti initiative that works towards supporting the visually challenged and provides them with sustainable employment opportunities. Thank you so much, sir. Now Today, I would Shri request Bhavesh Dr. Bhatia's Chiranjeev Sunrise Bhattacharjee, sir, Candles to say a few provides words employment to to more inspire than our students 10,000 for specially Nirmiti challenged 2024. Sir, if you please. Shri Bhavesh Bhatia's courage, enthusiasm, and dedication are commendable, and he is in true sense. So at first, a warm good afternoon to everybody. It's really nice to participate in this particular startup conclave organized by Regent Education and Research Foundation, the Institute Innovation Council of RERF. So it's nice to be here. I came in this campus earlier also for a program organized by Swami Vivekananda University. So Regent Education and Research Foundation is sharing the same campus. So it was really nice to come to this particular campus once again. I am basically part and parcel of Jadavpur University. I am professor of Chemical Engineering Department, Jadavpur University. But later from 2016, in fact, I came to the administration, became first the Dean of Faculty of Engineering and Technology, Jadavpur University, then became the Registrar of Jadavpur University. And from 2019 to 2023, for 4 years tenure, I was the Pro Vice Chancellor of Jadavpur University.
And after that, after expiry of that tenure, I am serving as a full-time basis on as a president of West Bengal Council of Higher Secondary Education, the board, the school board, which conducts the class 11 and 12 examinations in all government-sponsored and government-aided school across the state of West Bengal. So while I was at the Jadavpur University as dean well as pro vice chancellor, I was handling the IIC also, the Institute Innovation Council, and I was the chairman of the Institute Innovation Council also at Jadavpur University. And presently my friend, my colleague, Professor Arijit Banerjee is the chairman of IIC, Jadavpur University, who is also, I think, in the advisory board of this startup conclave. Now we are, as a president or chairman of the West Bengal Board of West Bengal Council of Higher Secondary Education, we are also promoting the entrepreneurship or innovation concept, the startup concept among the school children also, particularly in the class 11 and 12. And in that particular direction, particularly two students, a group of two students from Jadavpur Vidyapit, a very well-known school under WBC HSC, affiliated to WBC HSC. They have secured first prize also from National Innovation Competition, which was organized few months back at Bangalore. So this is really good. I always think that the Bengali students, they are having, the students from the West Bengal, they are having really very good innovations. Particularly the vision for the innovation, that is the most important. And obviously the thing is that basically we need to inculcate them. We need to encourage them to inculcate their vision. So that is the most important thing. And while I was at Jadavpur University, I tried to do that. But obviously the main problem is that particularly that idea we need to channelize so that some startup can materialize. The main problem is that basically the funding. The funding is one of the major issue. A very small prototype can be developed, but how to just implement that idea for the scale up. So that is the main challenging part, and to arrange the funding. So that is a big issue. But Government of India is nowadays encouraging lot of startup and innovation related activities. IITs also, they are doing lot in the particular innovation sector, the startup innovation sector. So actually there are a lot of activities are going on to encourage this particular innovation concept. The Honorable Prime Minister of India has introduced the Make in India concept, which is basically aimed to develop the indigenous technology at home. So that is a very important, and this was done to encourage the indigenous innovation and the entrepreneurship. So basically from the very ground level, basically from the school level, we need to start. We need to encourage the students who are having that particular creative mind to visualize whatever they are thinking and to help them to make it implement. So that is the most important thing, and in that particular direction, lot of organizations, lot of funding agencies are working, lot of institutions are working, and in that particular direction, RERF, the Regent Education and Research Foundation, the activities of their Innovation Council is really very good, and they have organized this Nirmiti 2024. I thank the organizer, the distinguished guests who are present here, to make it a great success. So obviously I think if we can move in this particular direction, we can really just get some output from the young minds. We can really get some output from the young minds at the college level or school levels, and we can really make it into the commercial level. In the department, in the Ministry of Education also, the Department of Science and Technology, they are sanctioning project now basically intended for the applied research. And they have introduced the concept of TRL, the Technology Readiness Level, which was in existence in America and Europe particularly. It is coming up from the United States of America, but it was
existing in USA, and nowadays it is existing in the Europe also. They have introduced the concept of TRL quite a long before, and they are encouraging it in all the funded projects, that there should be some tangible outcome from that particular project. There should be some tangible outcome. So the research should be application minded. So it should serve the society as a whole. So we need to develop some technology, some product which is capable of serving the society. That is the most important. And in that direction, the government of India as well as all the state governments are working in this particular direction to make the innovation much more realistic. So in this particular direction, the RERF, the activities of the RERF to organize this Nirmiti 2024 is really encouraging. I congratulate the administration of the RERF and the distinguished guests, those who are present here, and I hope that with the support and encouragement, this process will go on, and ultimately we'll get some real output from the budding technologists who are really present in this particular occasion. So I wish you all the best and wish you happy puja, because the puja is coming. So I wish you all the best. I have to leave very shortly because today it is the last working day. I have to go back to the office for signing some documents. So I wish all the participants a great puja vacation also. Best wishes to all of you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now, I would request all of you to kindly go and meet our students and give them some words of inspiration, sir, if you please. Now we are about to begin our next set of program, the journey of success. Before we do that, I have an announcement. All students who have participated in the business quiz, all students who have participated in the business quiz are requested to go to room number 212 and 214 for their preliminary round. All students who have participated in business quiz or biz quiz are requested to go to room number 212 and 214 for your preliminary rounds. We are about to begin our next program, Journey of Success. A startup fest would be incomplete if we don't talk about successful entrepreneurs and their vision and what made their business stand out from the crowd. Before I move on, I would like to thank our media partner, the Telegraph Online Edugraph, our radio partner, 91.9 Friends FM, Frequency Friendski, our event partner, Kevinters, our banking partner, State Bank of India, the banker to every Indian, and our silver partner, B. Boni Professional. I would now request Dr. Bhavesh Bhatia to come on the stage and give us a speech that would, I'm sure, inspire all of you. Sir, इधर. मेरी सर वो दो बैग थी ना, वो बैग दो कपड़े की वो यहाँ रखवा दीजिए। हाँ, वो दोनों छोटी वाली बैग कपड़े की। आपका? हाँ, बैग के अंदर वो बैग वो सोफा पे रखी थी, वो यहाँ रखवा दीजिए। हाँ सर, आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, हेलो, हाँ ठीक, वो बैग से यहाँ।
नहीं नहीं सर, इसके अंदर वो दो चीजें मैंने रखी थी ना सोफा के ऊपर में, वो कपड़े के, हाँ सर, दो निकाल के रखे थे सर, वो रख दीजिए। ओके, हाँ हाँ सर। यहाँ रख दीजिए सर। यस, ओके, थैंक यू। स्टिक की आवश्यकता नहीं सर। शुरू कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स, रिलैक्स। मैं महाराष्ट्र से कोई भाषण देने के लिए नहीं आया, आपके साथ दोस्ती करने के लिए आया हूं। सभ्यता, संस्कार और प्रेरणा से भरा पूरा ये महाकुंभ निर्मिति 2024 में उपस्थित सभी मान्यवर, सभी गुरुजन, सभी फैकल्टी मेंबर्स, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित विद्यार्थी मित्र और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में जो देवी शक्ति यहाँ पे उपस्थित है, आप सबको कोटि कोटि वंदन करता हूं। और आप सबकी उपस्थिति में जो जबरदस्त ऊर्जा, जो जबरदस्त एनर्जी मैं महसूस कर रहा हूं, उसके लिए शुरुआत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, अरे धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, हम खुशबू की तरह फूलों से उड़ते हैं। और ये अंधेरे की कैचियां हमें खाक रोकेगी, हम पंखों से नहीं अपितु हौसलों से उड़ते हैं, हौसलों से उड़ते हैं। अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए मार्क ट्वेन, वो अक्सर कहते थे कि इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार तब जब उसका बायोलॉजिकल जन्म होता है और दूसरा जब उसको अपना विजन मिल जाता है। दिखता नहीं दिखता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है विजन से। मेरे हिसाब से तो बिना विजन की जिंदगी मतलब बिना फ्यूल की कार की तरह है, उसका कोई मतलब नहीं है। और इस विजन की रूट पर हर्डल, स्पीड ब्रेकर हर कदम पे हमको मिलने वाले हैं। इस स्टार्टअप की, इस निर्मिति के प्रोजेक्ट में हर कदम पे हमको दुनिया भर की क्राइसिस को झेलना पड़ेगा, लेकिन वॉरेन बफेट से लेके रॉबर्ट कियोसाकी तक ने दुनिया की ऊंची से ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े रहकर अक्सर ये कहा कि जहां पे क्राइसिस है, जहां पे हर्डल्स है, वहीं पे ढेरों अपॉर्चुनिटीज भी है। और इस हर्डल्स के लिए मित्रों इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी उलझनों से ही हमें, अरे अपनी उलझनों से ही हमें अपनी मुश्किलों के हल मिले। जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों से हमें ढेरों रसीले फल मिले और उसके खारेपन में कोई बात तो जरूर होगी, तभी तो जाके सागर से हर बार गंगा जल मिले। तो ये जिंदगी का जो खारापन है वही हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। माता पिता की इकलौती संतान, डैडी दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाओ रोज खाओ वाली बात थी, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे पहला टर्निंग पॉइंट एक 6 साल की उम्र में आया, जब मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला दिला गया। लेकिन उन 4-5 हजार विद्यार्थियों की स्कूल में मैं अकेला ब्लाइंड, टोटली निगलेक्टेड, एक कोने में बिठा दिया जाता। आप ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाते, किताबें नहीं पढ़ पाते, चलो एक कोने में बैठो। मुझे भी लगता कि मैं ग्राउंड पे जाऊं, मैं भी फुटबॉल को किक लगाऊं, मैं भी क्रिकेट खेलूं, लेकिन मेरे हिस्से उन तमाम विद्यार्थियों की स्कूल बैग संभालने से ज्यादा और काम ही नहीं आता। लेकिन ये जो ऊर्जा बच गई ना एक कोने में बैठे बैठे, वो किसी क्रिएटिविटी के रूप में बाहर आना शुरू हुई, वो किसी निर्मिति के रूप में, वो किसी स्टार्टअप के रूप में बाहर आना शुरू हुई। कहीं से गिल्ली मिट्टी लाके उस क्ले में से अलग अलग शेप देना, कहीं से बांबू वगैरह ढूंढकर बड़ी बड़ी काइट्स बनाने की कोशिश करना। कोशिश यही होती कि जो समाज, जो सोसाइटी मुझे कोने में बिठा देता है, उसके सामने मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। उन दिनों लड़ाइयां बहुत होती स्कूल में, क्योंकि उस 10-12 साल की उम्र में और जो स्टूडेंट थे वो ब्लाइंड अंधा करके चिढ़ाते और यूनिफॉर्म फाड़ के घर जाना,
किताबें कोने में फेंक के रोने की शुरुआत कि बहुत हो गया, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। उन दिनों माँ जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, मेरे सर पर हाथ फेर कर एक ही बात कहती कि भावेश तू दुनिया को नहीं देख सकता, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तकिए में मुंह डाल के रो। अरे घर से बाहर निकल और कुछ ऐसा करने की कोशिश कर, कुछ हट के करने की कोशिश कर कि जिस दुनिया को तू नहीं देख सकता एटलीस्ट वो दुनिया तेरी तरफ देखने की शुरुआत करे। अब बात निकली है मित्रों, तो आपके साथ कुछ रिसर्च वाली बात भी बता दूं। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आपको ये रिसर्च नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि जब माँ सर पर हाथ फेरती है ना तो बाल यूं बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब बीबी सर पर हाथ फेरती है, मेरी हालत देख रहे हो क्या हो रही है जी। माँ के आशीर्वाद ही थे कि 16 साल की उम्र में विथ माय वन साइटेड फ्रेंड, जिसको एक ही पैर, हम दोनों ने मिलकर एक टेंडम साइकिल बनाई, 2 पेडल की साइकिल। उसका काम था हैंडल संभालना और मैं पीछे बैठ के पेडलिंग करता, और इस तरह से मुंबई, महाराष्ट्र से नेपाल, काठमांडू और वापस मुंबई 16 साल की उम्र में 45 दिनों में हमने 6000 किलोमीटर का साइकिल टूर किया, जिसको अनगिनत वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जा दिया गया। लेकिन मित्रों, ये जो हर्डल, स्पीड ब्रेकर, परेशानी, तकलीफ है, ये कभी अकेले नहीं चलते, पूरे परिवार के साथ में चलते हैं। हम जब भी निर्मिति की ओर, हम जब भी स्टार्टअप की ओर कदम आगे बढ़ाते हैं, ढेर ऑब्स्टिकल्स हमारे सामने आते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। एक हाथ में तो एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास की 2-2 डिग्रियां थी, लेकिन उन दिनों माँ नहीं थी। 4 स्टेज ब्लड कैंसर से माँ का निधन हो चुका था, लाखों रुपए का कर्जा, डैडी जिंदगी भर के लिए स्क्रिजोफेनिया के मरीज हो चुके थे। लेकिन बचपन से क्रिएटिविटी की चाह, 14-15 साल की उम्र में कुछ फैंसी कैंडल छूने को मिले, तब लगता था कि यही मेरे लिए ठीक है। आगे चलकर और कोई नौकरी न ढूंढते हुए मुंबई नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, एक ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां मैंने एक बेसिक ट्रेनिंग ली कैंडल मैन्युफैक्चरिंग की। और महाबलेश्वर जो मेरा होम टाउन है, महाराष्ट्र का एक बहुत प्यारा हिल स्टेशन है, आप गूगल कर सकते हो, सी लेवल से 5000 फुट की हाइट पे है। उस महाबलेश्वर मेरे होम टाउन में मैंने एक छोटे से कमरे में, भाड़े के कमरे में सनराइज कैंडल की नींव रखी। 5000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से चीजें तो बनाना शुरू किया, लेकिन जब तक हम चीजें बेचे नहीं, काम आगे कैसे बढ़े। अगर हम स्टार्टअप शुरू करते हैं, निर्मिति की ओर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण काम आता है मार्केटिंग। तो महाबलेश्वर एक टूरिस्ट प्लेस है, जिसकी मार्केट में मैंने एक हैंड कार्ड पे अपने बनाई हुई कैंडल बेचने की शुरुआत की, एक भाड़े की हाथ गाड़ी पे, एक 5000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से। लेकिन मित्रों, उस हैंड कार्ड पे जो सबसे सही काम मैंने किया वो ये था कि जो भी सामने ग्राहक आए, उनको मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनसे दोस्ती करने की कोशिश की, उनसे दिल से जोड़ने की कोशिश की। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एमए इकोनॉमिक्स के मेरे हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी कि देखो भावेश, अगर आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है, बिजनेस में सफल होना है, स्टार्टअप में सफल होना है, तो सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। आज सालों बीत गए कॉलेज छोड़े, लेकिन आज तक मैं अपने उन प्रोफेसरों को नहीं समझ पाया। मैं समझता हूं बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है ना, तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग प्रकृति ने भले सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार संजोगवश वो जमीन से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल भले यहां लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। इसलिए हर ग्राहक को मैंने दिल से जोड़ा, हर ग्राहक को मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश की मित्रों। लेकिन उस हैंड कार्ड पे काम करते करते एक बात ऐसी घटी जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। आज सुबह से आप कई लेक्चर सुन चुके हैं, बस ये जो बातें मैं कह रहा हूं शायद आपके दिल तक पहुंचेगी। नीता मेरी धर्मपत्नी उन दिनों मुंबई से एज ए टूरिस्ट आई हुई थी महाबलेश्वर, 8-8, 9-9 पेट्रोल पंप की इकलौती वारिस। मुझे हैंड कार्ड पे अकेला देखकर उसने रोज शाम को आके मुझे हेल्प करनी शुरू की, कैश ट्रांजैक्शन, पैकेजिंग, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बताना।
18 दिन बहुत अच्छे कटे, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो चुकी थी, लेकिन गड़बड़ 19वीं दिन हो गई। शायद मेरी खूबसूरती भी काम कर गई और उसके तरफ से शादी का प्रस्ताव आ गया। इस प्रस्ताव में उसने यही कहा कि मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा, अक्सर लड़कियों के ब्याह बड़े घर में, बड़ा घर मतलब ज्यादा पैसा, मुझे जिंदगी में पैसों के सिवा कोई बात ही समझ में नहीं आई। लेकिन 18 दिन स्टॉल पे काम करके अब मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल चुका है, विजन मिल चुका है। हम एक होते हैं और ऐसे अनगिनत हमारे ब्लाइंड और दिव्यांग मित्र हैं जिनके लिए काम करने की जरूरत है। मैं ना नहीं कह सका, हमने तो फुटपाथ पे एग्रीमेंट कर ली, लेकिन वो अनारकली के लिए एक मुगल बादशाह थे, लेकिन मेरे लिए मुगल बादशाहों की बड़ी फौज थी। स्टार्टअप हो, निर्मिति हो या ऐसा कोई जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो, हर्डल्स हर जगह पे आते हैं। इन लॉस ने शर्त रख दी कि अभी सगाई करो, 1 साल के बाद शादी। उनको लगता था इस 1 साल में लड़की के सर से समाज सेवा का भूत उतर जाएगा, वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह। लेकिन बाद में मैं कहाँ मानने वाला था, हर हफ्ते मुंबई पहुंच जाता उससे मिलने कि कहीं वो अपने विचार ना बदल दे। अब एक फेरी वाला एक स्ट्रीट होकर एसटी ट्रांसपोर्ट के पैसे कहां से निकाले, तो आजू बाजू के फेरी वालों से उधार के पैसे लेके मुंबई जाना और उन उधार के पैसों में बॉम्बे पहुंचते पहुंचते दिल की हर धड़कन एक ही बात कहती थी कि सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, वो शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है। और तमन्ना यह है कि रोज उससे मिलने जाऊं, लेकिन क्या करूं, आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। यहाँ जितने सामने यूथ बैठे हैं, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी लाइनों को बड़ा रट्टा लगा लो, आपको आने वाले दिनों में बड़ी काम आने वाली है। हर हफ्ते होता कि उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाऊं, फिर लगता मेरी छोटी सी गिफ्ट उसकी उस आलीशान फ्लैट में क्या दिखेगी, चलो कुछ फ्लावर ही ले लेते हैं। लेकिन राणा साहब, हर हफ्ते मैं मुंबई उससे मिलने गया, लेकिन एक भी फ्लावर नहीं खरीद पाया, क्योंकि जब जब मैंने फ्लावर खरीदने की बात सोची, दिल की धड़कन ने एक ही बात कही कि वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं, खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं। कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं, उसको क्या गुलाब दूं। बस साल पूरा हुआ, मैं नहीं चाहता था अपने घर से 1 रुपया भी लाए। मेरी इन भावनाओं की उसने बहुत कदर की और हमारे शहर के किसी स्कूल के क्लासरूम में दोस्तों को चाय शरबत पिलाकर हमने हमारी शादी संपन्न की। तीसरे चौथे दिन से उस फुटपाथ पे हमने काम शुरू किया। लेकिन हम यहाँ खुददारी स्वाभिमान की बड़ी बड़ी बातें करते और तभी लकड़ियाँ पटकते हुए और ब्लाइंड मित्र निकल जाते भिक्षा मांगते हुए। ऐसे ही 5 ब्लाइंड मित्रों को हमने हमारे साथ जोड़ा, 300 रुपये रोज के दे के रहने खाने का वादा करके उस भिक्षा के घटिया काम में से बाहर निकालकर हम हमारे साथ ले गए। लेकिन ये ब्लाइंड मित्रों का नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। अब 300 रुपये रोज के देना, रहना खाना, वर्कशॉप का भाड़ा, कच्चा माल मंगवाना और बेचने के लिए वो छोटी सी हैंड कार्ड थी, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तब लगा कि ये समाज सेवा ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, आज नहीं तो कल इसको बंद करना पड़ेगा। तभी बड़े बुजुर्गों की कही हुई बचपन की बातें बार बार मेरे दिमाग में चल रही थी। जो गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जो कहीं स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कुछ निर्मिति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, अक्सर बड़े बुजुर्गों के बात उनको एक बात जरूर सुननी पड़ती है कि जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, लेकिन मुझे कई बार सुनने को मिला। जरा कुछ अलग करने की कोशिश की नहीं कि तुरंत एक हथौड़ा चल जाता है कि अपनी मर्यादा में रहो, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। दिमाग में तो बड़े बुजुर्गों की कही हुई बात चल रही थी, लेकिन दिल की धड़कन कुछ और कह रही थी कि ये क्या बात हो गई, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। अरे उस निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें? हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते? और इन विचारों ने एक जबरदस्त ऊर्जा भर दी। उन्हीं दिनों मैंने रेडियो पे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की एक बहुत खूबसूरत स्पीच सुनी। उसकी एक लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी, उस लाइन को मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया
आपके इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इस लाइन से प्रेरणा लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी इमारतों की राह न देखते हुए एक लीन, एक माइक्रो प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, जहां एक टेबल मिला हमने हमारी शोरूम खड़ी कर दी, जहां और एक कमरा मिला हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। आजू बाजू के जिलों से होते हुए आजू बाजू के कई राज्यों के हमारे ब्लाइंड मित्र हमसे जुड़ना चाहते थे, काम करना चाहते थे। हमने सबको अपना पार्टनर बनाया। कंपनी को डिजाइन इस तरह से किया गया कि इसमें कोई मालिक नौकर नहीं। जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम था नंग पे डाला गया, मार्केटिंग पूरा डिडक्शन पे, कि बनाओ उतना आपका, बेचो इतना आपका। इस वजह से हर एक इंडिविजुअल अपना 100% देने लगा और इसका नतीजा ये हुआ कि जो कभी एक डिजाइन से मैंने शुरुआत की थी, आज सनराइज कैंडल 11,000 से ज्यादा डिजाइन प्रोड्यूस करती है। जो 20 किलो से मैंने शुरुआत की थी, गए साल हमें 5,500 मेट्रिक टन कच्चा माल कम पड़ गया। करीब 90 देशों में हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। 9,500 मेरे ब्लाइंड फ्रेंड मेरे साथ काम करते हैं। एक 30-40 हजार से लेके 70-80 हजार मंथली वे इनकम पा लेते हैं। जो घर उनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज काम करके पैसा भेजकर वे अपने घर संभालने लग गए। 4,600 रिटेल काउंटर के साथ में 71 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में सनराइज कैंडल काम कर रही है। और दिव्यांग कैटेगरी में हम सबसे ज्यादा टैक्स भरने वालों में से हैं। हम ईश्वर का, खुदा का थैंक यू क्यों ना कहें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है जी। मेरी बात आपको समझ में आती हो तो आप ताली बजाकर मुझे बता सकते हो कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। मित्रों, एक बात हम ध्यान रखें कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आके हमारा दरवाजा नहीं खटखटाने वाली, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। और ऐसा ही एक वाकया हुआ जब 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के तरफ से हमें एक नेशनल अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड के बाद उनके तरफ से 51 लाख का चेक ऑफर हुआ प्राइज मनी के तौर में। बचपन के माँ के संस्कार काम आ गए। मैंने झट से वो चेक उनको वापस देते हुए कहा, नहीं सर, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, आप देना चाहते हो तो मुझे काम दीजिए। इतनी बड़ी कंपनी, कितने सारे सिस्टर कंसर्न, कितने सारे गिफ्ट आर्टिकल्स आपको लगते हैं, तो उसमें आप हमारे प्रोडक्ट का उपयोग क्यों नहीं करते। इसमें खुशबू है, इसमें उजाला है और पीछे अनगिनत हाथों को रोजगार जनरेट हो सकती है। ये बात उनको इतनी अच्छी लगी कि 2008 से टिल टुडे रिलायंस इंडस्ट्री की हर न्यू ईयर गिफ्ट बनाने का हमें मौका मिला। बताइए इससे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की बात क्या हो सकती है कि कभी 51 लाख का चेक लौटा कर, मैं तो यूं कहता हूं कि वो 51 लाख का चेक हमने रिलायंस में इन्वेस्ट किया और उस 51 लाख के सामने 2008 से टिल टुडे करीब 160 करोड़ का काम रिलायंस हमारी ब्लाइंड टीम को दे चुकी है जी। उनका परचेस ऑर्डर आया तो और काफी कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया। 2014 में हमने किंग फिशर के लिए 3.5 लाख बियर मग बनाए थे। एक मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं, इसको देखकर मुंह में पानी लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह मोम का बना हुआ है, जेल और हार्डवेयर से। ऐसे 3.5 लाख बियर मग हमने किंग फिशर के लिए बनाए थे। लेकिन हम रोज सुबह उठकर राणा साहब, ईश्वर का, खुदा का कोटि धन्यवाद देते हैं कि मालिया जी देश छोड़कर गए, उसके पहले हमारा पेमेंट देके गए, नहीं तो अभी मैं इंग्लैंड के चक्कर लगाता होता। आज 500 से ज्यादा मैनेजमेंट कॉलेज हमें केस स्टडी करती है। मैं उन तमाम विद्यार्थियों से कहता हूं कि चीजें बनाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे जरूरी है चीजों को बेचना, मार्केटिंग सबसे जरूरी है। हम दुनिया की कोई भी कहावत उठा लें, हमें उसमें ये कोई भी भाषा ले लें, उसमें ये कहावत हमें मिलेगी कि अगर आप बेच सकते हो
तो मिट्टी भी बेच सकते हो, नहीं तो आप सोना भी नहीं बेच सकते। मार्केटिंग बहुत जरूरी है। 14 में पहला राष्ट्रपति पुरस्कार मिला अंध स्वयं रोजगार का। दिल्ली से लौटकर मैंने उन तमाम स्ट्रीट होकर को ढूंढा जिन्होंने वो छोटी सी हैंड कार्ड की जगह खाली कराने के लिए भी वो हैंड कार्ड कई बार फेंक दी थी। दिल्ली से लौटकर मैं उनके घर गया, उनको मिठाइयाँ दी, उनसे गले मिला और उनको मैंने एक बात जरूर कही कि आपने मेरी हैंड कार्ड फेंकी नहीं रही थी तो मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच ही नहीं पाता, आपने मुझे और मजबूत कर दिया। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी इस मानसिकता पे क्या खूब कहते थे कि जिस राह पे हम चल रहे हैं और उसमें रुकावटें नहीं आ रही तो राह ही गलत है। इस स्टार्टअप, इस निर्मिति की राह में ढेरों रुकावटें आएगी, लेकिन उसके लिए मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना, अरे मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा एक नया इम्तिहान होता है। डर कर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जहान होता है। तो इन संघर्षों से, इन हर्डल से हम लड़ें, न कि पीठ दिखाकर भागने की कोशिश करें। 2016 में 58,000 नॉमिनेशन में से सनराइज स्कैंडल को एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का दूसरा राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया, दूसरा नेशनल अवार्ड दिया गया। 19 में रोल मॉडल इंडिया का और 2022 में चौथा रोल मॉडल इंडिया का चौथा राष्ट्रपति पुरस्कार। लेकिन मित्रों, उस छोटी सी हैंड कार्ड से यहाँ तक का जो सफर है, मैं समझता हूँ उसमें एक ही शब्द काम आया और वो था हार्डवर्क, हार्डवर्क और सिर्फ हार्डवर्क। आज आप इस ऑडिटोरियम से, आज आप इस सभागृह से कुछ मत लेके जाना, लेकिन मेरी इन 4 लाइनों को अपने साथ बांधकर जरूर लेके जाना। मैं सभी से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे, सही डिग्री पे अगर हार्ड वर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्ड वर्क के सामने हार्वर्ड की कई कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। और इस हार्ड वर्क, इस मेहनत पे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, समा भी हवा में रोशन हो सकती है। कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है। आग की छोटी चिंगारी आग की ऊंची दीवार बन सकती है। मिट्टी जो रौंद दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं दोस्तों। लेकिन आज यूथ को लगता है लिफ्ट में जाऊं, बटन दबाऊं और रातों रात टॉप फ्लोर पे पहुंच जाऊं, लेकिन ये स्टेप स्टेप करके जो आगे बढ़ने की खुशी है बहुत बड़ी है। हमने नहा कि हमारे चारों ओर एक्सक्यूज और बहानों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि मुझे दिखता नहीं, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं गरीब परिवार से, मैं किसान के घर से। और आजकल तो देश के कोने कोने में बड़ा लेटेस्ट बहाना चला हुआ है कि मुझे आरक्षण नहीं मिला, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला, इसलिए मैं पीछे रह गया। मित्रों, जो है बेस्ट है, जिन परिस्थितियों में हमें ऊपर वाले ने रखा, कुछ सोच समझ कर रखा, आज की परिस्थिति के लिए हम उसका कोटि कोटि धन्यवाद दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। सोचिए, एमए की 2-2 डिग्रियां मेरे पास भी थी, थोड़ी और कोशिश कर लेता तो मैं भी किसी बैंक में क्लर्की करता होता, मैं भी किसी नीरव मोदी को लोन सैंक्शन करता होता, लेकिन सनराइज स्कैंडल खड़ी नहीं हो पाती। मित्रों, इन हजारों हाथों को रोजगार जनरेट नहीं हो पाते। आप ही की तरह कई स्टूडेंट मित्रों से मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में मिलता हूं, तब बड़ा आश्चर्य होता है कि सब कुछ होते हुए भी बड़ा हताशा, डिप्रेशन का माहौल है। माता पिता ने अपने आप को गिरवी रख के उनको अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाया, लेकिन स्टूडेंट्स हैं कि छोटी छोटी बातों में गिव अप कर जाते हैं। वही टीनेजर्स के कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप आ गए, कहीं एक आधा सब्जेक्ट रह गया, कुछ स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर पाए और बस हथियार डाल देते हैं। मैंने एक 3 इडियट फिल्म देखी थी, हिंदी वाली, आमिर खान जी की, बड़ी प्यारी फिल्म थी, बहुत अच्छा मैसेज था, लेकिन उसका एक सीन मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा।
कि उस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हेलीकॉप्टर बना के उड़ाने का प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो हेलीकॉप्टर बना भी लेता है लेकिन उड़ा नहीं पाया तो पंखे से लटक के खुद उड़ गया। दोस्तों, ऐसा इतना आसानी से हम गिव अप नहीं कर सकते। उसने अपने दोस्त बनाने ही बंद कर दिए थे। आज जिस उम्र में है मित्रों, एक 2-3 अच्छे मित्रों को जरूर अपने सराउंडिंग में रखिए। आपके प्रोफेसर, आपके फैकल्टी, आपके साथ काम पढ़ाई करने वाले, आपके परिवार के सदस्य, एक 2-3 लोग ऐसे जरूर हमारे साथ में चाहिए जिनको हम दिल की पूरी बातें कह सकें। अच्छी से अच्छी किताबों से जुड़े। हम 6-6, 7-7 घंटा नहा कि सोशल मीडिया पे कितने रील बने, कितने लाइक मिले, उसमें वक्त जाया कर देते हैं मित्रों। उससे ज़्यादा हम किताबों पे फोकस करें। खजाना है ये दुनिया का। हम कुछ 200-250 पेज रोज पढ़ने की कोशिश करें और ऐसा जरूरी नहीं कि जिस भी क्षेत्र में हम हाथ डालें सफलता ही सफलता मिलेगी, पहले असफलताएं भी मिलेगी। तो उन असफलताओं को स्वीकार करें। हमारे इंस्टीट्यूटों ने स्टूडेंट को हर चीज सिखा दी, लेकिन शाह मैडम, लक्ष्मी मैडम, एक बात हम हमारे स्टूडेंट को नहीं सिखा पाए और वो था हार बर्दाश्त करना। कहीं छोटी सी हार हाथ लगी नहीं, कहीं असफलता लगी नहीं कि तुरंत बच्चे गिव अप कर जाते हैं। कोटा से लेके राजेंद्र नगर, दिल्ली के अनगिनत एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। बिल्कुल दोस्तों, इतना आसानी से हम गिव अप नहीं कर सकते। और जो आज भी ये हताशा, डिप्रेशन के माहौल में है, आपके माध्यम से उनको मैं बिल्कुल कह देना चाहता हूं कि होके मायूस न कभी ढल जाना, होके मायूस ना कभी ढल जाना। शाम के अंधेरे की तरह जीवन एक सुबह है, रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह। हर दिन एक नया दिन, एक नई सुबह। जो बीत गया उसको डस्टर से साफ करें और जो एम्प्टी ब्लैक बोर्ड मिली उस पे वापस सुवर्ण अक्षरों से अपना जीवन लिखने की शुरुआत करें। महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों वाली बात आपने, मैंने, हम सब ने बचपन से सुनी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि इन 3 बंदरों के परिवार में एक और बंदर को शामिल करने की जरूरत है और वो है बुरा मत सोचो। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल हमारे साथ ऐसा होता है। आप फिल्म की भाषा ज्यादा समझते हो। किसी फिल्म, शायद ओम शांति ओम में शाहरुख खान इसी ताकत को कायनात का नाम दे दे। हजारों नाम हो सकते हैं, लेकिन एक ताकत बिल्कुल है इस पृथ्वी पे जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए तत्पर होती है। तो फिर हम अच्छा क्यों ना सोचें, पॉजिटिव क्यों ना सोचें, एनर्जी क्यों ना सोचें। काफी विद्यार्थी मित्रों से हाथ मिलाता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, उनकी हर उंगली में अंगूठी। मैंने कहा इतनी सारी अंगूठियां आपको पता नहीं चलेगा सर, एग्जाम सर पे है, बस इन ग्रहों के ऊपर में हमने छोड़ दिया है, वही नैया पार लगाए। वापस मुझे समझाते भी हैं कि देखो ये लाल वाला पत्थर का टुकड़ा मंगल ग्रह का, सफेद वाला किसी और ग्रह का। दुनिया भर के पत्थर के टुकड़े उन्होंने अपनी अंगूठियों में सजाए हुए हैं। मैं कहता हूँ ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और वहाँ वो करोड़ों 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 किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे। उनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि छोड़ छाड़ के तुम्हारी अच्छाई के लिए लग जाएंगे। जो अच्छा बुरा करना है तुमने खुद ने करना है। और जो आज भी ये धागा, तावीज और ग्रहों के चक्कर में हैं, उन तमाम लोगों को मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं। उस छोटी सी हैंड कार्ड से 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से काम करते करते आज सनराइज कैंडल 500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है मित्रों। आज हजारों हाथों को इससे रोजगार होता है। लेकिन आपको एक स्टार्टअप शुरू करना है, आपने निमृति की ओर आगे बढ़ना है, आपने एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है सक्सेसफुल, तो उसके लिए आपका फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है मित्रों। पैसे के पीछे हम अपनी फिजिकल फिटनेस को गिरवी रख देते हैं। उस साइकिल टूर के बाद मैंने 26-27 की उम्र में वापस पैरा ओलंपिक खेलना शुरू किया। गोला फेंक, थाली फेंक मेरे पसंदीदा खेल थे।
डिस्ट्रिक्ट स्टेट होते हुए नेशनल पहुंचा, 2001 में नया नेशनल का रिकॉर्ड बनाया और 2001 से टिल टुडे मित्रों शॉर्ट पुट के 117 पैरा ओलंपिक मेडल्स हैं मेरे पास में, 117 पैरा ओलंपिक मेडल्स। याद रखें, बॉडी फिट है तो हमारा मन, मस्तिष्क, विचार हर चीज फिट है। 2 साल पहले राकेश झुनझुनवाला साहब जो आकाशा एयरलाइन के फाउंडर हैं और स्टॉक एक्सचेंज के किंग माने जाते हैं, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि मेरे पास 63,000 करोड़ हैं लेकिन मैं अपनी बॉडी को ठीक नहीं कर पा रहा हूं मित्रों, मैं अपनी किडनी को ठीक नहीं कर पाता। ऐसे पैसे का क्या फायदा? फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। स्पेन का कोच मुझे ट्रेनिंग देता था जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से मुझे मिला हुआ था, वो रोज मेल करके मेरी वाइफ से कहता कि बाकी सब ठीक चल रहा है, 300-400 पुशअप्स लगाना, ग्राउंड प्रैक्टिस करना, लेकिन वो रोज मेल करके मेरी वाइफ से कहता कि भावेश को 6-8 किलोमीटर दौड़ाओ। वो मेरी वाइफ अब कोच कहता है तो करना पड़ेगा। अपनी कार में वो 15 फुट की नायलॉन की रस्सी रखती और बड़े से ग्राउंड में ले जाकर उस रस्सी का एक छोर अपने कैरियर को बांधती, दूसरा छोर मेरे हाथ में, वो गाड़ी चलाती, मैं रस्सी पकड़कर भागता। इस तरह से हमारी दौड़ की प्रैक्टिस चलती। लेकिन कुछ दिन में ही समझ में आ गया कि कहीं तो भी गड़बड़ है और उस दिन से आज तक मुझे उससे बहुत दबके रहना पड़ता है, क्योंकि गलती से कभी उसके सामने जोर से बोल देता तो दूसरे दिन ग्राउंड पे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती और बोलो जोर से, फिर खींच के लेके जाया जाता। लेकिन ये सब के सब मेडल्स उसको समर्पित हैं। 2011 में मैंने माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू की और उसके बाद में करसूबाई महाराष्ट्र का 9 बार, स्टोक कांगरी लेह का 2 बार, बेस कैंप और एडवांस के माउंट एवरेस्ट का, मीरा हिल नेपाल, आइलैंड नेपाल। लास्ट ईयर हमने माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पीक हमने क्लाइंब किया। मेरे काफ़ी मित्र पूछते कि भावेश आपको डर नहीं लगता, हाथ स्लिप हुआ तो गए नीचे। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि दिखता तो जरूर डरता। मित्रों, हम सब कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है, कोई ना कोई वीकनेस हमारे सबके अंदर है। दूसरों की वीकनेस से ज़्यादा हम अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी को ढूंढें और उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ने की कोशिश करें। पैसा सब कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से पैसों की ज़रूरत उतनी है कि जब वो लगे तो उसको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़ जाए, लेकिन इतने भी न हो जाए कि उसको छुपाने की ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, ये पैसा जो ज़्यादा का है वो समाज का है, लेकिन एक स्टार्टअप, एक निर्मिति की ओर अग्रसर होते हुए हम अपना तो भला करेंगे, हम अनगिनत लोगों को रोजगार दे पाएंगे। और अब कोई काम मांगने वालों का जमाना नहीं रहा, ये काम देने वालों का जमाना है, ये स्टार्टअप का जमाना है, ये निर्मिति का जमाना है। 10, 20, 50 साल के बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब मून पे, चंद्रमा पे भी कॉलोनियां बनेगी। और मित्रों, याद रखें, उन कॉलोनियों में जो सबसे पहले शोरूम खड़े होंगे ना, वो हमारे इंडियन लोगों के होंगे। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बस आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जो शुरुआत में मैंने कहा मार्क ट्वेन वाली बात, गोल, उद्देश्य, टारगेट, विजन, जिंदगी में इन शब्दों का होना बहुत जरूरी है। और इन शब्दों के लिए अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मंजिलों को कभी यह ना बताओ, मंजिलों को कभी यह ना बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहाँ है, लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहाँ हैं। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट। Before we move forward, I would request all students who are participating in business quiz, your business quiz is about to start. You are requested to go to room number 212 and 214. If any student is still lying around here, please go to room number 212 and 214 for your business quiz.
भवेश जी नमस्कार, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा. Now our next guest, Dr. Angshuman Chakraborty. Dr. Angshuman Chakraborty is the founder of Sociolotech Software Architect and entrepreneur with substantial experience in designing and developing enterprise software and services for Fortune 500 companies as well as startups. Enjoys solving complex software and bioinformatic problems, currently heading a product development and outsourcing company specializing in Web 2.0 technologies. Please come, sir. I would request to come our Dean Madam, Onindita, Dr. Onindita Das, Dean Admin Student Affairs, RERFGI, to felicitate him. I would request Dr. Angshuman Chakraborty to speak something about our entrepreneur and new startups. Hello. It's pretty late in the day today. I hope all of you had lunch, right? Today I will talk about myself, my startup, but the focus of this talk will be you. Let's start with a small correction. I am not a doctor. I am just a BTech from IIT Kharagpur. I did some management stuff in US. So my journey started with doing a BTech and joining a software company like many of you are likely to do. How many of you here want to become an entrepreneur? Any one of you want to become an entrepreneur? Okay, that's an interesting crowd. So let's start at the beginning, or what I'm going to impress upon you today. Swami Vivekananda once told a very famous slok from Katha Upanishad, or Katha Upanishad as you may want to pronounce. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. This applies not only to the field of spirituality, but it also applies to your profession. Be it working in any company, be it working in any startup, or be it creating your own startup. But have you ever asked the reason why you need to focus on one thing and one thing alone, and you need to focus till you succeed? That's because of the very simple reason, which is we human beings have a limited amount of energy and focus. If we disperse it among too many things, the chances are we will not succeed in either. So it is important for you to first identify what you want to do and focus on that, and then success is the easy part. Doesn't mean you won't have setbacks. You will have many of them, and that you will not hear from the the talks like this that you will get here. There will be many failures, and there will also be many successes, some bigger than others.
So briefly, I will go back to the basics where I'm coming from. I started as an, with a regular job at Infosys. Thereafter, I went to US, spent 6.5 years. I worked for some famed startup companies as well as established companies. Started with JP Morgan and then Sun Microsystems. Then I worked with a startup called Extensity, where we had 3 products. I was the tech lead for all the 3 products: expense report, timesheet, and travel plan, and product lead for 2 of them. We went for a blockbuster IPO back in 2000. Thereafter, I joined another startup called Double Twist. In Double Twist, we were the first to annotate the human genome. It was a humongous effort in those days. It took 6.5 months of computation alone to get the first annotation of the human genome. 6.5 months with 42 supercomputers. So you can understand the complexity and enormity of the task that we had to accomplish. I was the chief architect there. So I was behind many of the decisions. It was a very exciting journey. The team was brilliant. I'm just a B.Tech. Most of the people there were double PhDs, one from China, one from US. It's a brilliant team all around. Thereafter, I had to come back due to health issues in my family. Well, this is a point, this is an inflection point, or this is a point where many of you may have to face. I'm sure, being in Bengal, most of you are a single child, come from a single child family. You are a single child, very loved by your parents. The thing is though, you do not have much of a backup should something go wrong. So anyway, what comes first? Your business, your career, or your person? Your family. For me, it's the family which comes first. Because we earn money for people we care. Would you agree with that? So anyway, I came back. I started my company, and we created the first paid plugin for WordPress, translation plugin in 42 different languages. We sold several thousand of copies of it. Thereafter, my blog grew exponentially in a very short time. I earned a significant amount through a news media called Gaia Times. It still exists. And after that, so it was a news site, and it gained quite some fame. It was our election coverage of 2009 was archived by Library of Congress. Our feed was taken by LexisNexis, Hindustan Times, and so on. Thereafter, I created a software product called a CRM product, Relasso CRM. We sold it internationally as well as nationally to several marquee clients. And then of course, I had some personal crises, health-related crises in family. And at around 2019, after a great loss in personal life, not in business-wise, I decided, to take a break. I decided to retire because really I didn't have much to achieve in terms of wealth or in terms of fame or anything else. I decided to retire, and I spent a great 1.5 years doing absolutely nothing. It was fun. Reminds me of a story that I will come to later. And after 1.5 years, I realized I have way too much energy in me to lie around doing nothing. So I went back to my CRM product, revamped it, and started the game again. So we now have not only a CRM product, we have a product which is targeted to different niche markets like hospital, like clinic, car dealerships, and so on.
So it's a different strategy, and one of the challenges while doing so is in the recruitment process. Something I observed before I still observe. I had a lot of students from the engineering college. This year we'll hire 2. One of the challenges I observe is the capability gap, at least for the software engineers. And so yes, we developed a testing software so you can evaluate the candidates online, even coding examinations, without having to resort to manual test. Anyway, so what did I learn in this journey? And it's a very brief year of the journey. I learned several things. One is in a startup, if you want to do a startup, focus on getting multiple partners in a startup. Don't try to go alone, because the amount of work in a startup is humongous for a single person to handle. So either you have other partners or you have a team which you can trust with your life. Second thing about a startup that you need to understand is it's not a quick shortcut. It's not an easy game. You have to stick in there. You have to fight hard, harder than anything you have fought before, way harder than a job. But the rewards are of course humongous. But beyond telling you X, Y, Z amount of the monetary rewards, let me tell you of the other rewards. The freedom in terms of your time, freedom in terms of your expression. You do not have to cater to anybody, even your clients. You remember the famous rebuttal or famous counter that Elon Musk gave recently to his advertisers of X. You know? So that's the kind of power you will as a startup, as an entrepreneur of a startup. You literally are answerable to no one, except you have to follow the laws of the country. That freedom you never get in any job, irrespective of how much you make or you do not make. Second thing is flexibility of time. You can devote as much time as much you want to your family, to your other priorities, without having to worry about losing your job or losing your promotion, because you decide the future of your and your startup. Third, I mentioned, I reiterate again, focus on something that you really love to do. Startup is a long game. It's not something you do it and you suddenly become famous. While you may point out to me that there are instances of startups which became famous in a very short period of time, statistically on average, it takes around 7 to 10 years for a startup to go IPO. So you need to have, either you need to have a parent backing you up or a relative backing you up, or you need to get funds quickly to become a successful startup. And it's a long game. Don't assume it's a quick year. If you are looking for a quick option, then go for a good job in any of the top rated companies. Many of you are from BCA, MCA, BTech. I heard even the diplomas. One thing I would suggest to you as a student, based on my experience, my personal experience, as well as of the people I hire, you really need to know your subject. You really need to know what your field, ins and out of your field. If you do not know that, it doesn't matter how well you crack the interview, you will not be able to prosper in that profession. Unless you, and today most of the jobs are not public sector jobs. You cannot hope to be a lower division clerk and spend your life in peace. In a private sector company, if you cannot perform, they will not let you thrive there for long period. Your tenure is limited. At the first downturn of market, you will be the first to go or among the first to go. So back in my Infosys day, I was talking to one of the founders of Infosys, and he said they had I'm trying to remember, I think 60-20-20 plan.
20% are in the top bracket. They will be given all the facilities. 60% in the average bracket. And last 20% they will ensure that they leave the company by whatever means, by soft or hard means. So don't be in the last 20%, not also try to be in the middle segment. Whatever you do, if you are in software engineering or computer science, try to master your subject, be a good programmer. Whatever you do, try to master it. And don't shy away from it. As the previous speaker has said, that there is no shortcut to success. You need to put your effort, and surely you will find the greatest of success that you can imagine. Today when I am working, I am not working because I need money for me or my family or other people dependent on me. I am working because I really love what I do, and I really enjoy every moment of it, of creating something new. And I have this dream of, for a long time, of creating a lot of employment opportunities in Bengal itself. We have been sadly behind the rest of the country in many ways. Hopefully, with new crop of startups, we can bridge the gap. And startups are the way to go for any country, any region of the world. Because you know what? Public sector job is limited. There is one public sector job for maybe 100, 200 people. That cannot provide employment to everyone. So you need to understand that you need to create the future, your own future, as well as the future of others. But then, before you embark on any journey, one of the key points that you need to know, why are you doing this? If you are doing something, there has to be a good reason. Why are you doing a startup? It's hard work, right? What's the reason? Have you heard the interesting story of farmer, or rather a fisherman and a business person? This is a very interesting story. A fisherman was relaxing during the sunset, and having a rod in the ocean, hoping to catch some fish. When a businessman approached him, why are you being so inefficient? You can more aggressively fish and you will become richer. And he says, okay, fine, then what? You can buy a fishing boat. And the farmer continued to ask him, what happens then? Not farmer, the fisherman. He says, fine, from one fishing boat, you will buy several fishing boats, you will buy trawlers, you will be very rich, you will have several people working for me. And then he asked, and then what? Well, then you will have no care in the world, and you can sit on this beach and watch the sunset. Then the fisherman reminded him, that is exactly what I am doing now. So understand what you are doing and why you are doing. One other thing, have a motivation bigger than ideally, have a motivation other than money. If you have just the money factors, there are many ways to earn the same amount of money. Have a motivation to create something, maybe to help someone. Like the previous speaker you have heard, he had a great motivation to help the blind. And these are the kind of people, have a motivation. So you create something that even surpasses you, surpasses your, individual achievement. So that, I think, is the key of the startups. To create a successful startup, you need to find really good people, people who are loyal above all. Techniques, skills can be taught if you have above average brain, but loyalty cannot be taught, integrity cannot be taught. You can either start your startup or you can work for a startup, but focus on doing a days of honest work when you are there. Honesty and integrity are still very important even in today's world, and that is a surefire way to succeed. Even though you may hear, oh, so and so did nothing and he's still successful, but those are for a very temporal period. Being good at what you do,
Having honesty and integrity, you succeed over and over again and again, and you continue to succeed till success doesn't matter to you anymore. And hope you reach that level soon. It seems a very interesting crowd today, and I'm guessing many of you are very hungry, so I'll keep the speech short. Pretty much I'm done. If you have any questions, you can ask. Anything? Okay. Thank you everyone. See you soon. Thank you so much, Dr. Chakraborty. Now, as we move on to the last segment of Journey of Success, I want to call upon stage Dr. Arijit Banerjee. Sir, the moment I searched your name, the word came out, Toilet Man of Bengal, as coined by Ministry of MSME, Government of India. I would request Mr. Pradip Mukherjee, Principal Advisor, RERS GI, sir, to come on the stage as well. I would request Mr. Mukherjee to felicitate Dr. Banerjee. Sir, if you please. Thank you so much, sir. Dr. Banerjee have made a flagship project where more than 9,000 bio-toilets have been installed nationwide as part of a rural and urban health and hygiene program under Swachh Bharat Abhiyan since 2026. And he touched over 1.3 crore lives as an enabler of newer sanitation and hygiene standards. Dr. Banerjee is currently the Executive Director of Remesis RPL Perfect POS with its unique manufacturing of patented range of bio-toilets, mobile toilets, wheel mounts and electronic auto-wash toilets. Sir is also a member of DESC, Ministry of MSME, Government of India. On the corporate front, Dr. Banerjee has an enriching and insightful 16 plus years of experience and has been an administrator in corporates like ITC, Accenture, Wipro and Reliance Capital, AGA Group. It is my honor to have Sir on here. I would need 2 minutes of your time before Sir sets up his PPT. Our media partner, the Telegraph Online Edugraph, radio partner 91.9 Friends FM, frequency Friendski, event partner Keventers, our associate banking partner SBI, the banker to every Indian, and our silver partner is B. Boni Professional.
I know it has been a long day and you all are tired, but trust me, these 2 days you're gonna remember forever. So kindly cooperate. I know students sitting at the end. Can you guys please face the stage? The students at the end who are sitting for the center stage. Can you guys face the stage? Volunteers? Can I have volunteers here? मीडिया पार्टनर Achha. Sir, I would request everyone to please give a round of applause to Dr. Banerjee. Sir, the stage is all yours, and I am especially very much intrigued to know why you are called the toilet man of Bengal. Thank you to all of you who has been very patiently waiting. After 2 power-packed speeches, it is very difficult for me to say something because I am not a very motivational speaker or sort of a guy who can motivate you a lot on this. Okay. I will try to share my life story with you guys. I think that will give you a different perspective of life, how it is. Hand mic, na? So my first request will be people who are sitting in the back bench, if you can just come forward, because the sound is echoing at the backstage if I am not wrong. So if you can just come forward, people at the back benches or back chairs. So how many are still very eager to listen to some kind of a talk? Only one. I'll repeat the question. How many are still eager to listen to some kind of a talk? And if I say how many of you are interested to know about yourself? See, I do some magic. If I say that I can do some magic, will you believe me? How many of you will believe if I say I'm a magician? You will believe whatever I say, right? You don't have options. See, basically, हमारा बचपन बड़ा अलग था, ठीक है ना? हमारे बचपन में बोला जाता था गाड़ी घोड़ा ताराई चढ़े जरा पढ़ाशोना करे, तो पढ़ाशोना करे जे गाड़ी घोड़ा चढ़े से. Have you heard this? What does you're all childs or kids only in front of me, almost half of my age. So I think आपके ज़माने का जो दस्तूर है अभी वो है stay hungry, stay foolish, right? How many of you want to stay hungry and foolish? Not anyone, I guess. So everybody would like to gain something, especially make something out of themselves and then earn money. पैसा रोजगार करते হবে তো সবাইকে নাকি? That's the main motive of life. How many of you do not want to have income? কজনের ইনকাম করার দরকার নেই এরকম কিছু লোকজন আছে? আমার মনে হয় নেই, না থাকাটাই খুব স্বাভাবিক. So I will start with something very interesting if it at all attracts you guys. I will start with a short video that's on us, our journey, and then I will come to you how we came across into this kind of a life learning. You can start the video.
this has touched 1.3 crore lives. He and his team have built sustainable toilets for the government, corporates, various committees, and even construction sites, correctional homes, jails, even for the Honorable Prime Minister of India, which he has used many times. As the toilet man of Bengal, and only toilet man of Bengal. Hi, this is Dr. Arijit, the winner of Tally MSME Honours, champion of Cause Awards. We are the founder of Ramesses RPL Perfect Cause. Dr. Arijit and his wife Arpita have changed the conventional way of toilet making and have pioneered in portable bio-toilets. In the true spirit of Swachhata, all we try towards combat groundwater contamination, and that is how we have built almost 9,000 plus toilets nationwide, and in turn this has touched 1.3 crore lives. He and his team have built sustainable toilets for the government, corporates, various committees, and even construction sites, correctional homes, jails, even for the Honorable Prime Minister of India, which he has used many times. As the toilet man of Bengal working for the environment, what is your biggest challenge right now? Illiteracy. Because या तो लोग समझना नहीं चाहते हैं या फिर समझ नहीं पाते हैं कि how important it is all about bio toilet. And more so, being a business owner, the most important factor that we work on is how you are contributing back to the society and what legacy you are leaving for your next generation. The journey of his business has given new meaning and purpose to his life. As a champion of this noble cause of sanitation and sustainability, he has truly demonstrated the power of one idea. As we know, it all starts with one. Meet the one and only toilet man of Bengal. Hi, this is Dr. Arijit, the winner of Tally MSME Honours, champion of Cause Awards. We are the founder of... Thank you. So that's basically our life story. It all started with one, okay? To be very honest, मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, तो उतना बिजनेस का अनुभव हमको है नहीं. I'm the first generation entrepreneur, the first one who is into entrepreneurship in my family. And on the other hand, my in-laws are into 4 generations of business, into jewelry business. So they don't like somebody who is much into business. So there is a clash and conflict always from the beginning. Now, I was very well settled in my corporate career. I'll not go into details. You can have it from the online available sessions and all. So I was very happy with the corporate career, which was almost 16 years. And then we gave World Bank exams in 2014. And later to that, we came back to India for doing Swachh Bharat audits. So Swachh Bharat audit करते time हम लोगों को ये पता चला कि basically बहुत ज़्यादा toilet बनाया जा रहा है because we want to make our districts open defecation free. That's how it is called, ODF. And in the entire spirit and the drive to make toilets, we are basically going to harm the groundwater table which is available in the rural area. Because I don't know how many of you know, most of you guys who are, how many of you are from urban India, like city of Calcutta or suburbs? Most of you. तो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है जो पानी आप नल का पानी पीते हैं ना, कॉर्पोरेशन जो देके जाता है, it's basically a Ganga Action Plan water and you are actually consuming treated water, sewage treated water you are having. How many of you know that? आज के बाद पानी पीना छोड़ देंगे क्या? How many of you plan to stop drinking water from tomorrow? See, basically in गांव देहात में क्या है ना, ये चीज नहीं है. How many are comfortable with Hindi? So possibly you understand Hindi, right? I'm not good in Bengali, that's why I'm speaking in Hindi and English. So basically हम लोग क्या देखें कि the entire series of toilets that are getting made in rural India, they are also troubling the groundwater because percolation of the solid and semi-solid waste lines groundwater table को disturb कर रहा था, and there is nobody to take care of that. Neither your rural India has this kind of a facility of STP or sewage treatment plants so that you can actually consume better water or treated water. And this is when we started digging in, thinking right back to the government, both rural and central. And we finally found out that for government it is more of numbers, how many toilets they are getting made throughout the districts and all. And real contamination is not taken care by anybody. So then we made a formula with some help of our seniors, a few of them who are scientists.
and especially my father's friend. So this is when we made a formula when the solid waste can be converted into reusable water. And it is reusable in the sense you can use it for gardening, flushing and basic cleaning. And the BOD and COD of the water is quite normal. It's a pH neutral water if you understand physics. pH neutral means it can be used for almost anything. Except for drinking, we do not recommend drinking of this water though. But सबसे ज़्यादा ज़रूरी या फिर सबसे ज़्यादा गड़बड़ वाला काम था जो वो समझाना. आज के डेट में मैं आपको भी बोलूँगा कि ये पानी कन्वर्ट हो जाता है तो you'll start not believing me. So that is when I said that you have to have some magic, and I became the magician to do this for the company. So हम लोग बहुत presentation देते थे district magistrates को and state owned authorities को. And finally, somebody gives you a chance. You got a chance. On that chance, you actually tried doing something. So our first that kind of a chance was Joydev Mela. If you have heard of Bolpur, the place is called Bolpur, and very near to that, every year a folk Mela hota hai, which is of international standard. And this is when we got a first chance from the government to install our toilets and show that yes, this toilet can convert the solid waste into reusable water. That was our first instance, and touch wood, there has been no look back after that. So before that or after that, we never had any inhibition that we can come up as an entrepreneur. We started making different products after that in terms of toilet. So Banglaয় বলে শয়নে স্বপনে জাগরণে এখন টয়লেট ঘুরে আর কি সব সময় মাথার মধ্যে. So that is when in 2016-17 we started doing chassis mount mobile toilets. We have our own manufacturing unit. 2018 something clicked, so I was thinking 10 years beyond time. And आज के डेट में societal elevation is a way of life. So everybody wants their children to do something different apart from the normal job they are doing. तो 10 साल बाद क्या होने वाला है? People who do housekeeping or janitor kind of a job, they will not definitely want their children to come into this kind of a profession. So this is when we started thinking of putting artificial intelligence. I can see a lot many demo tables who are working on artificial intelligence. Especially a few of them actually I liked very much. I'll give a feedback structure tomorrow. And we started integrating artificial intelligence into toilet. So लोग आज के डेट में डरते हैं कि artificial intelligence आ जाएगा तो job खा लेगा, robotics आ जाएगा तो people will not be necessary. But that's a myth, because what a robot can do and you can do may be similar, maybe the robotic capacity is much higher. But one difference will always remain, that is how you connect. So if you call, how many are management students here? कितने लोग management पढ़े हैं?